Hi Karan. Karan? Hi Karan. Okay, he's got a he's wearing an Air Dil Hai Mushkil t-shirt. This picture that I'm about to wait for Air Dil Hai Mushkil. Yay! I'm a huge fan of all three of you, and I hope the film does extremely well at the box office. Thank you, God bless. My question to all three of you is: do you feel Air Dil Hai Mushkil could have been a different take on relationships if a woman filmmaker had to direct it? No, because I believe that I reflect both genders with a lot of strength in my inner. I've tapped into my feminine side very strongly as an individual. My respect for women has always been paramount. In fact, I think they are definitely the stronger gender, no doubt about that. And I think that for me, their situations, their handling of emotional situations is something that I firmly believe has taught me enough for me to tell the story. I don't think a woman could have done, not for any other reason, because I represent women much more than I do men when I tell my story. So for me, I'm already a flag bearer, so you don't need a woman to tell the story, you have me. Now, this is Hi, a Karan. this is a fan session, and we're going to go the extra mile for the fans that went the extra mile. You can get a picture with them. Come. We went the extra mile. Why you never wore Raji? You're such a fan. After the film, please. No. After the film, you're not going to wear this t-shirt. We'll stand behind that. Hi, Karan. I will be watching both the films, Shiva as well as Adil, because equally excited with both. All the best to you. Thank you. My name is Abhishek. My question is for Aishwarya. अपने प्लान बता दी, अपना इंटेंशन भी बता दी. कुछ दिन पहले अभी हमने आपकी वो सरब्रिज में परफॉर्मेंस देखी थी. What we thought it was outstanding, और पता नहीं क्यों इसको उतना लाइमलाइट नहीं मिला. I thought it was one of the most honest performance ever. और मुझे पता नहीं मतलब इसको और भी लाइमलाइट मिलना चाहिए था. It is I can rate it among one of your all-time best. मुझे ये ताल से भी ज़्यादा honest लगी ये performance. Thank you very much. This is feeling good. We can go on and on. मैम आप इसके साथ शूटिंग साथ कर रहे थे, ऐ दिल है मुश्किल, और बिल्कुल ही 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं. तो आपको थोड़ा मुश्किल हुआ एडजस्ट करने में, या फिर एज एन एक्टर? ये साथ शूटिंग वाली बात जो एक्टर्स कहते हैं या क्रिएटिव लोग कहते हैं, साथ नहीं होती है. दिन अलग रहता है, शेड्यूल अलग रहता है, तो ऐसी कुछ बात है नहीं. एक ही साल में शूटिंग हुई है, लेकिन साथ नहीं हुआ. They obviously on a different day and on a different schedule. Today films most of the times, I mean I don't know if I'm speaking for everyone here, but it's very rarely that you go from one studio to the next, from one day to the next, working on different films, because people take a chunk of your dates when you're working on a film, and you have the pleasure of working on that film by getting into that character and essaying that character. So that's the way films are done. कोई patchwork shooting होती है या re-shooting होती है, तो then it's different. It feels relatively simultaneous. नहीं तो simultaneous नहीं रहता. Each one has their own individual schedule. And as an actor, like I said, and I've probably done that most, if I'm fortunate, throughout my career, where I've tried to go from one to the next in terms of the kind of assignments that I choose, where I get the opportunity to essay something different and share that different with my audience. And when there are generous audience members like you who will be appreciating that difference, it feels gratifying. So thank you very much. My question is to... Hi Karan. Karan here. Oh, where? Karan, 1998 में सत्या आई थी, 2000 में दिल चाहता. उसके बाद सिनेमा की लैंग्वेज जो है, हिंदी सिनेमा की लैंग्वेज बदल रही है. कहानी कहने का अंदाज बदल रहा है, ट्रीटमेंट बदल रहा है. फिल्मों में रियलिज्म ज़्यादा देखने को मिल रहा है. क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप भी उस तरह की रियलिस्टिक फिल्में बना पाएंगे या बना सकते हैं? उस बारे में सोचा है कभी, या क्या आपके मन में चलता है जब आप इस तरह का सिनेमा देखते हैं? दिवाकर बनर्जी, श्रीधर राघवन, अनुराग कश्यप, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरी पिक्चर अगर आप खूबसूरती को देखें, आपको ऐश्वर्या राय रियल नहीं लगती? ये रियल है. I can touch her, I can feel her, she's real. Similarly, अगर आप खूबसूरती को दर्शाएं, इसका ये मतलब नहीं कि रियल नहीं है. मेरी पिक्चर बहुत रियल है. ऐ दिल है मुश्किल is a real film. It's about real emotions, real people in the real world, जिसके साथ ये हालात
बहुत इस कमरे में मैं अश्योर कर सकता हूँ कि 90% of the people will connect to the narrative structure of this film or to the characters because उनके साथ उनकी जिंदगी में उनके जहन में ये गलियां से वो गुजर चुके हैं, उनके जहन में ये ख्याल आ चुके हैं, तो बहुत रियल है मेरी पिक्चर। अगर खूबसूरत लगते हैं इसका मतलब नहीं कि रियल नहीं है। कभी-कभी क्या होता है, reaction when he narrated, कभी-कभी क्या this होता is है, so real, you know, the way the characters are speaking to each other, the dialogue, I mean when I kept listening to moments, it is so real. That's the first thing I said to him. अब जो अनुराग कश्यप की रियलिटी है, दिवाकर बनर्जी की रियलिटी है, वो मेरी रियलिटी से अलग है। हम सब रियल शायद हों, लेकिन हमारी रियलिटी अलग है, उनकी सिंटैक्स अलग है, हमारी सिंटैक्स अलग है। अब क्योंकि मैं शायद उस किस्म की फिल्में नहीं बनाता जो बहुत ग्रिटी है या डार्क है, या मुझे मैं प्यार और मोहब्बत की कहानियां दर्शाता हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे कैरेक्टर्स अनरियल है। जब वो अपना मुंह खोलते हैं इस पिक्चर में, जब राइट टिल द एंड तक उनके साथ उनकी सफर, उनके ख्याल, उनके शब्द, अल्फाज जो भी वो कह रहे हैं, वो सब मेरे हिसाब से बहुत रियल है। तो ये मेरी रियल वाली पिक्चर है। अभी इसका हर डायरेक्टर का एक सुर होता है, अभी किसी का सुर हाई है तो किसी का लो है। गानों की तरह, रागों की तरह हर फिल्म मेकर का भी सुर होता है। ये मेरा सुर है और मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मेरी धुन शायद बदल जाए, मेरी सुर नहीं बदलेगी। One last question. Hi. Karan, Yeah. the question is Hi, for Ash. Karan. Hello. Yeah. Karan, Anushka and Aishwarya. Have you all been ever in one-sided love? And how young were you all? एक तरफा प्यार हुआ है क्या ऐश्वर्या आपके साथ, आपकी जिंदगी में? ऐसा कोई गधा होगा जो ऐश्वर्या राय से मोहब्बत नहीं करेगा, वो कौन होगा? वो ऐसा, She never broke मेरी heart. वो तो वैसे हुआ इसके, हाँ, लेकिन इसकी जिंदगी में एक तरफा हो नहीं सकता अभी। हाँ, चलो हमारी Anushka. अनुष्का, एक तरफा प्यार हुआ, एक तरफा, डोंट लाई, वाओ, दिल में कभी नहीं टूटा। बहुत प्रैक्टिकल हूँ कि आई टेल यू व्हाट, तो आई एम नॉट लाइक दिल नहीं वो टूटा। मुझे किसी को देख के ऐसे कोई दूर खड़ा हुआ है मेरे को इससे प्यार हो गया, ऐसे नहीं है। अगर मुझे नहीं लगता है वो लड़का इंटरेस्टेड है, मुझे कोई प्यार नहीं होता है। सो आई ये सेफ्टी है मेरा। एक यू कांट जस्ट गो लाइक हां प्यार हो गया मुझे। अरे क्या कह रही हो, दिल भी विकेट की तरह होता है अनुष्का, आसानी से टूट जाता है। You want to answer? No, I already gave you such a long answer about my एक तरफा प्यार problems. Karan, good Hi, afternoon. yeah, one Yeah. last question. Yeah. Raju, I'm a fan of yours as well. So, and I watch all your shows. Now you can come and take a picture with Thank me. you so much. Come, Rajiv. Santosh, come here. No, Santosh, please come pick me up. Thank you. You can ask your question. No, take a photo first. Take a selfie. ले selfie. Please come here. Santosh, please come down. Please come here. Okay, get it. ले लो. Thank you. Ask the question. My question Okay, very much of you. Okay, I'm filmmaker myself. I'm from South. Hi. I'm from Karnataka. Hello. Okay, we are two Karnataka beauties here. My next film is called Ye Cinema Hai. Ye Cinema Hai. It's a tribute to you. It's a tribute to me? Yes. It's ready. It's a web series that I'm doing. I've named all the characters, all the film stars in the film. Okay. And then my question to you is now, you write a script first and then listen to the retro songs and put the title, or first listen to songs and write a script. Like, Ye Dil Hai Mushkil, Kalo Na Ho, Kabhi Khushi Kabhi Gum. Yeah, so. I don't know, yeah. So much I never thought. It just happens like that. I'm a filmy bacha. So as a result, the titles come from my referencing from Hindi songs. Like I told you, I'm a big obsessive fan of Hindi cinema, and some of the titles just come from songs. Yeah, it's definitely true. It's been true for Kabhi Khushi Kabhi Gum, Kalo Na Ho, Ye Dil Hai Mushkil, Bari Kuch Kuch Hota. I think there was no song. And Kabhi Alvida Na Kehna also. Yeah, so it's actually a good point. Well done. So next film. Next film will be Chikki Chameli. Thank you. Thank you, sir. One picture. Come. Santosh, please come here. No, Santosh, my right here. Please come. No, he's coming. Come. Santosh, come here. Come.
you so much for a lovely session. We're looking forward to watching the film, of course. Yes, we'll take some pictures now. मेरे भी fans हैं.